Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your social study teacher, Ms. Farheen, and I welcome you all to your social study class. My dear students, as you know that we are on unit number 2, culture, and today I will deliver its 5th lecture. But before moving on towards our main lecture, let's quickly recap what we did in the previous lecture. For that, you have to pause the video, listen to the question very carefully, and then answer the question. What benefits do we get from mass media and social media? So only tell me about the benefits. Yes, we connect to a larger group of people through social media. We can discuss and talk about different news, and we can share our thoughts. We can share our work with them, and through mass media we get news, authentic news always. Whatever is happening in the world, whatever ever is happening in any corner of the world, we can know that through mass media, and it is always authentic. So my dear students, now is time for an activity. For this activity, you have to open page number 23 and listen to the instructions carefully, and then pause the video and follow the instructions. So my dear students, research and analysis number 2. Your teacher will divide the class according to the assigned task. Ask them to develop a newspaper. So today you have to develop a newspaper, यानी कि आपको एक mass media का जो मीडियम है आपको उसको डेवलप करना है, which is newspaper. Every group has to collect information and paste it into the newspaper. So my dear students, हर ग्रुप को डिफरेंट जो न्यूज़ है वो कलेक्ट करनी है. सम असाइन वन ग्रुप टू कलेक्ट न्यूज़ ऑन स्पोर्ट्स फ्रॉम द स्कूल. आपको स्कूल की न्यूज़ जो है वो कलेक्ट करनी है. द अदर ग्रुप विल कलेक्ट द न्यूज़ अबाउट द एंटरटेनमेंट. वन ग्रुप विल कलेक्ट द न्यूज़ अबाउट the school authority and anything. So combine the news and paste them in the newspaper, and that's how you can develop your school newspaper. So each group will search about any of the given informative articles, advertisements, editorials, news items, weather reports, cartoons, jobs, anything. So आप इससे स्कूल की न्यूज़ भी कलेक्ट कर सकते हैं, और from the outside world you can also collect the news and then paste them in your newspaper. आप एक बड़ा सा चार्ट पेपर लें और उसके अंदर आप पेस्ट करते जाएं, and this will be your newspaper. So pause the video and complete this task. I hope you have done it. Now paste this newspaper in your classroom, and it will look very nice. So my dear students, today all the students will be able to identify the advantages of means of information. ठीक है, आज हम सिर्फ advantages जो है means of information के उनके बारे में बात करेंगे, and the skills that will be developed are recognition, understanding and analysis. So my dear students, the Islamic perspective, the Prophet, peace and blessing of Allah be upon him, said, "It is enough for a man to be a liar to spread every word he has heard." सो माय डियर स्टूडेंट्स, हमेशा बात को आगे पहुंचाने से पहले उसकी तहकीक करनी चाहिए. कभी भी सुनी सुनाई बात को जो है वो आगे नहीं बयान करना चाहिए अगर आपको ये पता है कि ये न्यूज़ इट इज़ ऑथेंटिक और नॉट. सो ऑन सोशल मीडिया डेली बेसिस पे आप ये चीज़ देखते हैं कि हम बहुत सारी न्यूज़ जो है वो सुनते हैं, बात इधर से उधर से हम सुनते हैं, एंड मोस्ट ऑफ देम आर नॉट ऑथेंटिक एंड दे आर फेक. तो कभी भी रिसर्च के बगैर या सर्च के बगैर किसी भी सुनी सुनाई बात को आगे से आपने किसी दूसरे को बयान नहीं करना. So my dear students, some pre-reading question before we move on towards the main reading. Quickly tell me, how do you find TV and newspaper useful? Because they always give you authentic news and you know about the world, whatever is happening in the world. It is entertainment, sports, anything. You can easily know about that. And is the use of social media beneficial? Yes, social media is also very beneficial. You can discuss whatever is happening in the world. You can discuss on that with different communities. इसके अलावा आप अपनी सोच को आगे जो है वो ट्रांसफर कर सकते हैं. You get a medium to communicate with a larger group of people. So social media is also very beneficial. So my dear students, now open page number 21 in your books, SST 5 books.
I hope everybody has opened the page. Now let's start the reading. Today we will discuss about advantages and disadvantages of means of information. Today we will only discuss about the advantages. In next lecture we will discuss about the disadvantages. The means of information are a blessing for people. They provide people with a bundle of information at one click. On the other hand, they have some negative impacts on society. There are various means of communication such as mass media, social media and print media like newspaper and news articles. Here are some advantages and disadvantages discussed below. So today we will only discuss about the advantages of means of information. So advantages, conceptual guidance. Media provides conceptual guidance to society. It provides a platform for opinion, debates and analysis on various issues. People put forward their idea on social media easily and quickly. So my dear students, आप conceptual guidance जो है वो easily जो है वो आपको social media से मिल जाती है, क्योंकि social media जो है आपको अपनी opinion आगे transfer करने का मौका देती है. उस opinion पे आपको मुख्तलिफ लोगों की जो है वो राय जो है वो मिलती है. You get different replies and different thoughts of different people on your views. So इस तरीके से आपके concepts जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा improve होते हैं. आपको different चीज़ें जो है वो share करने का मौका मिलता है. Next is solution of social problems. People give much importance to their native traditions. Some traditions have become social vices like child abuse, child labor, missing person, etc. Media gives awareness regarding these vices. Radio and television telecast documentary programs, films, news, dramas, and dialogues on these topics. On social media, people communicate with a large group of specific issues and also help them. Similarly, news articles are also written on such issues. So, my dear students, आपको awareness जब प्रोवाइड करनी है या कोई सोशल इशू है या प्रॉब्लम है, जैसे कि चाइल्ड अब्यूज है या कुछ ऐसे रिचुअल्स हैं जो डिफरेंट ट्रेडिशंस के अंदर फॉलो किए जाते हैं, विच आर बेसिकली वाइसेस, दे आर, दैट मींस दे आर बैड हैबिट्स, दे आर नॉट गुड फॉर द सोसाइटी. तो ऐसे वाइसेस के लिए, ऐसी बैड हैबिट्स के लिए आपको अवेयरनेस प्रोवाइड की जाती है ऑन सोशल मीडिया. डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, डिफरेंट कम्युनिटीज हैं जो आपको ये वेब अवेयरनेस प्रोवाइड करनी है. सिमिलरली ऑन मास मीडिया, जैसे कि टीवी है और रेडियो है, वहां मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्रीज जो है वो टेलीकास्ट की जाती हैं, जिनसे आपको पता चलता है कि कौन सी जो हैबिट्स हैं या चीजें जो हैं दे आर नॉट गुड फॉर द सोसाइटी. इसी तरह से न्यूज़पेपर जो है इट इज़ ऑल्सो अ मीन्स ऑफ प्रिंट मीडिया है और मास मीडिया का भी पार्ट है ये. इसके अंदर भी मुख्तलिफ आर्टिकल्स जो है वो प्रिंट किए जाते हैं, जिनको पढ़ने के बाद, रीड करने के बाद वी गेट टू नो दैट देयर आर मेनी प्रॉब्लम्स इन द सोसाइटी विच नीड सोल्यूशन. सो इस तरीके से आपको सोशल मीडिया या जो मीन्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, इससे आपको मुख्तलिफ चीज़ों के, मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स के, जो सोशल प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में भी पता चलता है. Political awareness. Media has become an essential means of generating political awareness in public. Hidden and true facts are told to the people. Rulers, opposition, and politicians convey their points of views through media. Media establishes contact between the government and the public. Media analyze the performance of the government. So my dear students, आज की दुनिया जो है वो politically बहुत ज़्यादा aware है if we compare them to the past. तो आजकल के लोगों को, even the kids, the younger kids like you, they know different names of the parties, political parties, जैसे कि PTI, PMLN, PPP. तो इस तरीके से MQM, आपको बहुत सारी पार्टीज के बारे में पता है और you get to know about them कि किसका क्या point of view है through social media and mass media. और सोशल मीडिया और मास मीडिया जो है वो इन गवर्नमेंट के और इन पार्टीज के दरमियान में एक कनेक्शन पैदा करता है. यू ऑल्सो नो अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नमेंट. आपको गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस के बारे में भी मीन्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो है इनसे पता चलता रहता है कि व्हाट इज हैपनिंग इन द गवर्नमेंट, व्हाट आर दे डूइंग फॉर आवर बेटरमेंट. तो इस तरीके से पॉलिटिकल अवेयरनेस जो है वो बहुत ज़्यादा डेवलप हो गई है बिकॉज ऑफ मीन्स ऑफ इंफॉर्मेशन. नाउ national unity on page number 22.
Media promotes the sentiments of unity at national festivals. On these occasions, national songs, national anthems, programs related to current affairs, special editions, documentaries, films, and special reports are telecasted. People also express their sentiments on different social networking sites. So my dear students, national unity जो है वो बहुत ज़्यादा develop होती है social media से. Just these days 23rd March जो है it has passed. तो मैंने ये चीज़ नोटिस की कि थ्रू मास मीडिया मैंने जो है वो 23 मार्च की जो परेड थी और जो पूरा उसका उन्होंने इतना अच्छा उन्होंने वो किया हुआ था, तो आई फील वेरी कनेक्टेड टू माई कंट्री. वट एवर द आर्म फोर्सेज आर डूइंग फॉर अस, तो उनको भी कॉम्प्लीमेंट किया जाता है. तो आप एक दूसरे से कनेक्टेड हो जाते हैं, आप नेशनली जो है वो आप कनेक्ट हो जाते हैं. यू फील मोर पेट्रियाटिक थ्रू दीज मीडियम्स. कैसे कि जब आपके लिए मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्रीज और मुख्तलिफ पेट्रियाटिक मूवीज टेलीकास्ट की जाती हैं और सोशल नेटवर्किंग साइट्स के ऊपर आपको मुख्तलिफ जो है सॉन्ग सुनने को मिलते हैं, तो इस तरीके से यू फील मोर कनेक्टेड टूवर्ड्स योर नेशन. सो दैट्स हाउ ये नेशनल यूनिटी जो है उसको भी प्रमोट करता है सोशल मीडिया. देन हेल्थ एंड मेडिकल प्रॉब्लम्स. Social media and mass media try to develop people's consciousness about health issues to develop a healthy society. People are made aware through advertisements and general programs. For example, awareness about coronavirus pandemic, COVID-19 through mass media, print and social media. So my dear students, जो आपका means of information है, social media and mass media both, they are playing a very vital role कि आपको health awareness जो है उसके बारे में भी पता चले. कोरोना वायरस, द कोविड पेंडेमिक जस्ट पास्ट, अभी भी बहुत जगहों पे है, इट्स स्टिल देयर, बट बिकॉज वी हैव इम्यून विद इट, हम लोगों ने वैक्सीनेशंस कराई, हमें सोशल मीडिया के थ्रू पता चला कि हमें वैक्सीनेशन ज़रूर कराना चाहिए, हमें मास मीडिया के थ्रू पता चला कि अगर हम वैक्सीनेशन नहीं कराएंगे तो इसके क्या डिसएडवांटेजेस हैं. इसके अलावा कौन कौन से प्रिकॉशंस हमें लेने चाहिए, ये चीज़ें भी हमें डेली बेसिस पे मास मीडिया और सोशल मीडिया से पता चलती चाहिए थी, लाइक वेयरिंग अ मास्क, सैनिटाइजिंग, washing hands, cleaning your clothes, and what other precautions that are required. ये चीजें हमें सोशल मीडिया और मास मीडिया से पता चलती रहीं, तो कि देखें कितना बेनिफिट है. इसके अलावा मेंटल हेल्थ जो है उसके ऊपर भी बात की जाती है, स्ट्रेस के ऊपर बात की जाती है. इसके अलावा डेंगी जब इसका ब्रेकआउट होता है तो उसके ऊपर हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए. वी गेट टू नो दैट टाइम टू टाइम विद द हेल्प ऑफ सोशल मीडिया एंड मास मीडिया. सो हेल्थ के ऊपर भी बहुत फोकस है मास मीडिया और सोशल मीडिया में. देन कम्स टू प्रोवाइड एंटरटेनमेंट. सबसे ज्यादा तो एंटरटेनमेंट प्रोवाइड की जाती है ना आप लोगों को, मास मीडिया से भी और सोशल मीडिया से भी. मीडिया प्रोवाइड्स recreation to tired minds. For this purpose, comic programs, dramas and films are presented. Social media also offers good stuff to entertain people. So my dear students, entertainment के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं mass media पे भी और social media के लिए. ये मुझे ज़्यादा explain करने की ज़रूरत नहीं है because you know about that more than me. Then comes connectivity. People get connected to their loved ones through social media. They can see them through video calls and share information through it. So you connect to any place, to your relatives through social media. Then education. Media presents programs on educational affairs and policies. Students get benefits from online and recorded lectures on different websites, internet and radio. Also play an essential role in the progress of education. So my dear students, education के लिए बहुत ज़्यादा जो है social media, it is playing a vital role. Just like we are connected right now, it is because of social media. And when there was a COVID pandemic, एक बहुत अच्छी example है कि because of social media, students get their education online at their homes because the schools were closed. तो इस तरीके से social media जो है, it is very beneficial and helpful. So my dear students, next is media regulation. अब मीडिया को कैसे रेगुलेट किया जाता है. देयर इज पैमरा जो कि आपकी चीज़ों को जो है उसके ऊपर लुक करती है, देखती रहती है और देखती है कि कोई ऐसा कंटेंट ना जाए बाहर जिससे जो है वो लोगों के अंदर एनार्की फैले या कोई भी जो है वो गलत बात जो है वो ना लीक आउट हो. सो द मास मीडिया, प्रिंट मीडिया आर रेगुलेटेड बाय एन इंस्टीट्यूशन नोन एज पैमरा. No issue is allowed. No one is allowed to share false and inappropriate news. In such way, antisocial acts are prohibited or controlled.
सो माय डियर स्टूडेंट्स, पेमरा जो है वो एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो कि कोई भी फेक न्यूज़ को या अनऑथेंटिक न्यूज़ को न्यूज़पेपर में और टीवी या रेडियो में लीक आउट या बाहर नहीं जाने देता. तो दे हैव अ स्ट्रॉन्ग कंट्रोल ऑन दैट. So PEMRA stands for Pakistan Electronic Media Regulatory Authority. Pakistan Electronic Media Regulatory Authority. PEMRA. Pakistan Electronic Media Regulatory Authority. मैं repeat कर रही हूँ बार बार तो आपको पता चल जाए that what is PEMRA stands for. So my dear students, this is all the advantages of means of information, both social media and mass media. So let's practice. You will do exercise number B, question number 6, 7 and 8 given on page number 29 in your notebooks. Pause the video and complete these questions. You can also take help from your book. I hope you have finished it. Now we will move forward towards your evaluation. So my dear students, what are the advantages of means of information? Any two. Provides entertainment, provides awareness for different problems, provide political awareness, provides healthcare awareness. So these are all the different advantages of means of information. So my dear students, your homework for today is to complete this worksheet. So how you will complete it? First of all, you can download it from the description box below this video, or you can get it in print form by your teacher. So lecture 5, advantages of means of communication. Write down your name and your class. Then write any 3 advantages of means of communication, 1, 2 and 3. ठीक है. मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन जो है इसके कोई भी 3 एडवांटेजेस जो हैं वो आपको वर्कशीट में लिखने हैं एंड देन सबमिट इट टू योर टीचर. दिस इज योर होमवर्क. एंड व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ मीन्स ऑफ इंफॉर्मेशन? डिस्कस विद योर पेरेंट्स. ठीक है. मीन्स ऑफ इंफॉर्मेशन के क्या एडवांटेजेस हैं पेरेंट्स के साथ डिस्कस कीजिएगा. टेल देम व्हाट एवर यू नो और वो दे विल बी इम्प्रेस्ड कि आपको कितनी सारी बातों के बारे में पता है. सो माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव लर्नड दैट इफ we use the means of communication positively, we can benefit from them in this age of development and make ourselves better. अगर आप इन तमाम means of information को positively use करेंगे तो we can make our society a very better place. So my dear students, I hope you have enjoyed today's lecture. Keep everybody around you safe. Have a good day. Thank you so much and Allah Hafiz.